Good morning, students. We have complete unit number 2. So we will discuss tomorrow the main numericals which are completed in previous CBSE papers. So first question is a wire. Question number 24th. A wire of 15 ohm resistance gradually stretched to double its original length. It is then cut into two equal parts. These parts are then connected in parallel across 3-volt battery. Find the current drawn from the battery. This one is a wire of resistance 15 ohm, gradually stretched to double its length. When stretched, area becomes half, so R dash becomes N square R, that is 4 into 15, 60 ohm. So new resistance of the wire becomes 60 ohm. According to question, it then cut into two equal parts and connected parallel with a cell or battery of EMF 3 volt. When it divided into two equal parts, each part must have resistance 30 ohm. This one 30, this one 30. Effective is 15. We have to find the current. That one is 3 volt, 15 ohm. Ohm's law. I equal to V by R. 3 by 15. That one is 0.2 ampere. दोबारा a wire of resistance 15 ohm stretched to double its length. It means its new resistance becomes 60 ohm. Then cut into two equal parts and these two parts connected parallel with a battery EMF 3 volt. Find the current drawn by the circuit through the battery. So current will be equal to 0.2 ampere. Is question number 40. This one is the circuit diagram. A. This one is 5 ohm. This one 10 ohm. This one is 10 ohm. And this one is 5 ohm, and this terminal is B. There is a key at this point, switch you can say. First, find the effective resistance of the network between the point A and B when switch is open. Second, when switch is closed. First case, switch is open. Second case, switch is closed. When switch is open, this one is a simple combination 10 5 in series, 5 10 in series, 10 5 in series. So you can say 15 ohm and this one is 15 ohm. Both are in parallel, so resultant becomes a 7.5 ohm. Second case, when this one is closed, when switch is closed, beta, these two are in parallel. So you can say that becomes 5 into 10 upon 15. That is 10 by 3 ohm. Similarly, these two are in parallel. That becomes again 10 by 3 ohm. Both are in series. So effective across A and B becomes 20 by 3 ohm. ये आपके पास है. इसी में आपके पास है a wire of resistance 4 ohm bent to form a circle. Wire of resistance 4 ohm bent to form a circle.
specimen of the same wire connected across the diameter. वैसी ही वायर डायमीटर के अक्रॉस कनेक्टेड है. यू हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी. तो बेटा पूरे सर्कल का 4 ओम है. दिस हाफ पोर्शन बिकम्स 2 ओम. दिस वन इज आल्सो 2 ओम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, फॉर विच इफ radius is r according to question 2 pi r length have the resistance 4 ohm. So resistance per unit length is 4 by 2 pi r and this length is 2r. So resistance of wire AB that becomes 4 upon pi. These three resistance in parallel effective suppose are 1 by 2, 1 by 4 upon pi, 1 by 2, LCM is 4, 2 plus pi plus 2. So R becomes 4 upon 4 plus pi. दोबारा देखिए, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम bent to form a circle, specimen of the same wire connected across its diameter, find the effective resistance. तो बेटा अक्रॉस डायमीटर है तो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. अपर हाफ 2 ओम, लोअर हाफ 2 ओम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द डायमीटर. कैसे? 2 पाई आर लेंथ हैव 4 ओम रेजिस्टेंस, सो 2 आर length must have resistance 4 by pi. These three are in parallel. That one is simple one. Answer will be 4 upon 4 plus pi. Next question is a parallel combination of 3 resistances take a current 7.5 ampere from 30 volt supply. Parallel combination of resistance, this one they are connected with the battery. Question number 41, current 7.5 ampere 30 volt battery. Battery 30 volt 7.5 ampere. If the two resistor 10 and 12, find the third one. 10 ohm, 12 ohm. Find the value of R. Find the value of R. Suppose ये आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस X है, तो बेटा what will be the current? Current 7.5 is equal to 30 upon X. X becomes 30 by 7.5, that becomes 4 ohm. So effective must be 4. These three are in parallel. So 1 by R plus 1 by 12 plus 1 by 10 is equal to 1 by 4, because effective is 4. Is 24. 6 2 24 नहीं भैया, ये आएगा 120. LCM is 120. 30 minus 10 minus 12, 8 by 120. R becomes 120 by 8. 4 2 जा 8, 30. That one is 15 ohm. So resistance of the third resistor is 15 ohm. ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 41. Now next question is, two wire X and Y having the same resistivity. Same resistivity means same material.
their cross section area in the ratio 2:3 means A1 by A2 is 2/3 and length in the ratio 1:2. So L1 by L2 1/2. They are first connected in series, then in parallel to a DC source. Find the ratio of the drift velocity of the electron in the two wires of the two cases. First, these two wires connected in series with a DC. Second, they are connected in parallel with the same source. Okay. In series, gentlemen, you know very well current is same, and we know the relation between current and drift velocity, ANEVD. What is VD? VD becomes I by ANE. ये टर्म आपके पास फिक्स है, ये फिक्स है. It means VD inversely proportional to A. So drift velocity of first is to second reciprocal of the area means ratio will be 3:2. 3:2. अब हम बात करते हैं यहाँ. This one is the parallel combination for the same current is ANEVD. In parallel, potential is same, so it is replaced by V by R. VD becomes V by R ANE. V by ANE. R को लिखेंगे बेटा रो L by A. A get cancelled. V by NE rho L. Rho is same, NE is same, V is same. It means drift velocity inversely proportional to length. So in the second case, VD1 by VD2 must be reciprocal of the length ratio. That one is 2:1. 2:1. This one is about the drift velocity. Next question is question number 46. Unsolved numericals. That one is there is a cell, potential is V, terminal is A, current is 2 ampere and this resistance is 6 ohm, this resistance R3, current across R3 is 0.8 ampere, second is R2, current is 0.4 ampere and last resistance is 10 ohm, current is I3. Okay, what is the equivalent resistance between A and H? Terminals are A, B, C, D, E, F, G and H. We have to find equivalent resistance between A and B. So ये आपका मल्टी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल है जिसमें किरचॉफ्स लॉ भी यूज हो जाएगा, किरचॉफ जंक्शन लॉ यू कैन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल current is 2 ampere, these three are in parallel, so current divide, this 1.8, this 1.4. what about I3? बेटा B पॉइंट पे आप लगाइए किरचॉफ फर्स्ट लॉ. इनकमिंग करंट मस्ट बी आउटगोइंग करंट प्लस I3. सो I3 becomes 0.8 ampere. I3 becomes
0.8 ampere. If current is 0.8 ampere, what about the potential difference across DE? That is equal to IR. That becomes 8 volt. I think these three are in parallel, so potential must be same. So value of R3 becomes V by I. V8 0.8, that one is 10 ohm. Value of R2 V by I, that one is 8 by 0.4, that one is 20 ohm. These three resistances in parallel. So 1 by R, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 20. LCM 20, that one is 5 by 20. So R is equal to 4 ohm. तो बेटा ये तीनों का 4 ohm है. I think 6 and 4 are in series. So effective resistance of the circuit becomes 10 ohm. एक बार फिर देख लीजिए, ये सर्किट आपको गिवन है and you have to find the effective resistance across H and H, for which first of all current is 2 ampere divided into 3 parts, 1.8, second 0.4, so I3 must be 0.8 using Kirchhoff first junction law. If current is there, resistance is there, so we can easily calculate the potential difference. These three resistors in parallel, so potential is same, current across each one 2 is given, so we can easily calculate the value of R2 and R3. Finally these three in parallel and they are series with 6 ohm, so effective resistance will be 10 ohm. एक आपके पास जैसे कैपेसिटर में भी आया है इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, उसका एग्जाम्पल और देखिए. सपोज दिस वन इज ए कॉम्बिनेशन, each resistance is 2 ohm. We have to find effective resistance across A and B. Across A and B. उसके लिए आप क्या करेंगे, इससे पहले मैं आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ. सपोज y इक्वल टू √2 अप टू इन्फिनिटी. How to solve this problem? Y must be equal to √2 as it is छोड़ दीजिए. ये वाली टर्म तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग y के इक्वल है, सो दैट इज प्लस y. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वेयर इज 2 + y. दिस वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको अपन सोल्व कर लेंगे. y की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा. एग्जैक्टली यहाँ पे करेंगे कि यदि इफेक्टिव अक्रॉस ए बी सपोज कर लेते हैं x है, ओके, देन वन सिंगल रिपीटेशन शुड बी एडिड, और यू कैन से फर्दर आपके पास वैल्यू क्या आएगी x, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसका भी इफेक्टिव क्या आना चाहिए x. तो ये तो सिंपल है, बोथ इन पैरेलल, द रिजल्टेंट इन सीरीज विद 2 ohm. सो वो पैरेलल में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट वन इज 2 ohm, दिस बिकम्स 2x by 2 + x. इफेक्टिव इज x, बोथ इन series. This both are in series, so x becomes 2 + 2x by 2 + x. LCM and cross multiply,
2x प्लस एक्स स्क्वेयर, 4 प्लस में 2x प्लस में 2x, ये कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4 इज 0. सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac 16 बाई 2 इंटू ए, 2 प्लस माइनस 20, 2 रूट 5 बाई 2, 1 प्लस माइनस रूट 5. 2 values are there, 1 minus root 5, 1 plus root 5. Answer will be this because this value is negative और नेगेटिव रेजिस्टेंस आपके पास अभी तक आपने डील नहीं किया. सो आंसर विल बी 1 प्लस रूट 5, 1 प्लस रूट 5. Four cells, each of identical EMF E. Number of cell is 4. EMF is E. External resistance are connected in series to the variable resistor. Show that variation of terminal voltage of the combination with the current output is this one. ये आपके पास है करंट, ये आपके पास V और ग्राफ आपके पास ये है 0.5, 1, 1.5, 2.0 corresponding to 1, 2.8, 1.4, 4.2, 5.6. For this combination, what is the EMF of the each cell? 4 cell in series, this one. Suppose each having internal resistance R. First of all, we have to find the EMF of the cell. You know very well, potential difference across the ends when no current is drawn means when current is equal to 0, V is equal to E. तो बेटा इस ग्राफ में करंट 0 है, V क्या है 5.6 वोल्ट. ये जो 5.6 वोल्ट EMF है बेटा ये 4 सेल्स का है, दैट इज इक्वल टू 4E. सो E बिकम्स 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट. सेकेंड इज फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल डज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स इन द सर्किट. आल्सो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल. तो पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं. वी नो द रिलेशन V इक्वल टू E माइनस आई आर. वट इज R? E माइनस V अपॉन I. अब ध्यान दीजिए, दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ 4 सेल, सो E मस्ट बी 5.6. V 2.8. कब? when current is 1, that is 2.8 upon current is 1, answer is 2.8. ये जो 2.8 ओम आया है, this is the total internal resistance of 4 cells. What about the internal resistance of each cell? That becomes 2.8 by 4. That is 0.7 ohm, 0.7 ohm. Second part is for what value of external resistance
maximum power transfer theorem or maximum current drawn by the circuit from the source of EMF. That one is the maximum power transfer theorem whose condition is small r must be equal to capital R. So capital R should be equal to internal resistance. That is not the answer 0.7. That will be answer 2.8 ohm. Reason being this is the internal resistance of one cell. It is a combination of 4 cells. So answer capital R must be 2.8. This one is very important from CBSE point of view. ऐसा क्वेश्चन आता है in which one or two or more than 2 cells in series with load resistance whose VI graph is there. 3 चीज़ें निकालना है. Internal resistance, second one is the EMF and last one is the load resistance for the maximum power transfer theorem. तो कैसे बेटा इस ग्राफ में करंट जीरो लेंगे, उस दौरान जो वोल्टेज है उसी को अपन, या उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम EMF कहेंगे. तो यहाँ से तो फर्स्ट पॉइंट से आ जाएगा EMF. सेकंड कॉन्सेप्ट रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस. दैट वन इज E माइनस V बाई आई. बीच में जो डॉटेड लाइन होगी उस I के कोरस्पॉन्डिंग V गिवन होगा. E अपने पास है, इसमें पुट कर देंगे, R आ जाएगा. और लास्ट आपका है लोड रेजिस्टेंस which can be easily calculated using the maximum power transfer theorem. Means when load resistance is equal to internal resistance, power delivered is a maximum. ये आपके पास आ जाएगा. इसी के बेसिस पे CBSE 2008 का अनदर क्वेश्चन, दैट वन इज the following graph variation terminal potential V across the combination of 3 cell in series with a resistance. Here the combination of 3 cells, they are connected with a load resistance R. Suppose EMF E, internal resistance of each cell is small r. VI graph is here. This one is V, this one I, 6 and 2. This one is 2. This one is 6. 4 corresponding to 1 ampere, 3 volt टर्मिनल पोटेंशियल. वही 3 चीज़ें आपको निकालना है. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट EMF. कैसे? व्हेन I इज इक्वल टू 0, V इक्वल टू E. I 0, V इक्वल टू 6. 6 इज इक्वल टू 3E. E इज इक्वल टू 2 वोल्ट. आप कहेंगे सर यहाँ E से 3 कैसे लिया? बेटा दिस वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 cells in series. So 3 cells in series, that is 3E equal to 6. E must be equal to 2 volt. Second, find the internal resistance. कैसे? That one is small r equal to E minus V upon I. EMF कितना आपके पास? 6. V क्या आपके पास? 3. करंट क्या आपके पास? 1. आंसर इज 3 ओम. ध्यान रहे दिस वन इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दीज 3 cells. सो R विल बी 1 ओम. R विल बी 1 ओम. आप इसको लिखें इंटरनल रेजिस्टेंस, ताकि हम इसको रिप्लेस कर दे 3R से. राइट. लास्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड? फॉर द मैक्सिमम पावर लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इंटरनल रेजिस्टेंस. मीन्स कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू 3R. R is 1, so capital R must be 3 ohm. If this one is 3, you have to find the current using Kirchhoff second law. क्या लिखूं? 3I
प्लस तीनों का अलग अलग कर दिया, I इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर, दैट इज 3i, क्योंकि r इज वन ऑफ ईच, एंड माइनस ई माइनस ई माइनस ई, दैट इज 2 2 6 इज इक्वल टू 0, 6i इक्वल टू 6, so I becomes 1 ampere. So 1 ampere current when flowing through this circuit, power delivered by the source of EMF will be maximum. So this one is about series combinations of cells. तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है बेटा, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। सभी न्यूमेरिकल्स आपसे एक साथ नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं। फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर सोल्ड, देन फॉर अनसोल्ड, और कोशिश करें टॉपिक वाइज आप लें। सपोज यू डील्स विद ओम्स लॉ, केवल ओम्स लॉ के कंप्लीट करें। आप डील कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर, केवल पोटेंशियोमीटर के डील करें। इस तरीके से आप लगेंगे। यदि आप 50% भी कर लेते हैं, 12th के बच्चे इजीली कर पाएंगे, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। बाकी जैसी प्रॉब्लम बचती हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो है जून तक जो है ओपन के स्कूलिंग के ओपन के मैक्सिमम चांस हैं। तो जैसा भी शेड्यूल रहता है उसमें आप प्रेजेंटली जो है यू शुड हार्ड वर्क फॉर पर्टिकुलरली फॉर न्यूमेरिकल्स एज वेल एज फॉर द concept theoretical part as well as for numerical part. Thank you. Have a nice